हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से AIPMT 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर बिलो शोज टू पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय ए गैस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी। ये ग्राफ दिया है। इन द प्रोसेस AB 400 joule of heat is added to the system, and in the process BC 100 joule of heat is added to the system. The heat absorbed by the system in the process AC will be 380 joule, 500 joule, 460 joule and 300 joule. एक ग्राफ दिया है। ABC this volume side, this is 2 into 10 to the power minus 3. This is C के सामने, this is 4 into 10 to the power minus 3, and pressure 2 into 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 4 Pascal, and here 6 into 10 to the power 4 Pascal. 6 into 10 to the power 4 Pascal. Process A to B. According to first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus work done delta W. Heat absorbed 400 joule. This is positive 400 joule. Delta U, final internal energy at B, UB, internal energy at A, UA, and delta W, volume change is 0, hence delta W is 0. So UB minus UA is equal to 400. Equation number 1. Then process B to C. Delta Q, heat absorbed 100 joule, and work done delta W will be positive क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है B to C. This will be the area between the curve and the V axis. ये this is P. वर्क डन होगा पॉजिटिव 6 into 10 to the power 4 प्रेशर है into change in 4 into 10 to the power minus 3 minus 2 into 10 to the power minus 3 meter cube plus 6 into 10 to the power 4 into 2 into 10 to the power minus 3. This comes 1 plus का 120 joule. According to the first law of thermodynamics, delta U plus delta W, delta U होगा UC minus UB
प्लस 120 एंड दिस इज 100 प्लस का, तो यू सी माइनस यू बी will be 100 minus 120 is equal to minus 20 joule. ये क्वेश्चन नंबर 2. अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. यू बी से यू बी क्रॉस हो जाएगा, यू सी माइनस यू ए इज इक्वल टू 380. इक्वेशन नंबर 3. अब ए टू सी, प्रोसेस ए टू सी, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू that will be positive, or area under the curve and between the curve and v axis, ये होगा 6 into 10 to the power 4 plus 2 into 10 to the power 4 by 2 into 2 into 10 to the power minus 3. This is 4 into 10 to the power 4 into 2 into 10 to the power minus 3 is equal to 80 joule, plus का 80 joule, and delta U is equal to UC minus UA is equal to 380 joule as per equation number 3. Then delta Q is equal to delta U plus delta W is equal to 380 plus 80 is equal to 460 joule. जो हीट एब्जॉर्ब करे होगा that will be 460 joule. This C is the correct option. Next question है, the Carnot engine having efficiency 1 by 10 H, heat engine is used as refrigerator. If work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is 100 joule, 99 joule, 90 joule and 1 joule. Efficiency of Carnot cycle is N 1 by 10. Coefficient of performance of refrigerator beta is equal to 1 minus efficiency divided by efficiency. 1 minus eta 1 by 10 upon 1 by 10. This is 9 by 10 upon 1 by 10. Beta comes to be 9. This is a freezer. This is freezer. ये एक सबस्टेंस है. वर्क डन by pump, and this energy will be dissipated to surrounding. This is surrounding. Its temperature is T2. Suppose this is T1. जो फ्रीजर से एनर्जी एब्जॉर्ब की दैट इज Q2, जो वर्क डन किया दैट इज W, एंड एनर्जी डिसिपेटेड टू सराउंडिंग इज Q1. तो बीटा होता है Q2 by W,
Q2 is equal to beta into W. Beta is 9 and work done is 10 joule. This comes to Q2 is 90 joule. 90 joule heat absorb करेगा from lower temperature. This C is the correct option. Next question है 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along a path AB as shown in figure. ये फिगर दी है 5 किलो पास्कल, 2 किलो पास्कल, 4 किलो पास्कल, 4 cubic meter and 6 cubic meter वॉल्यूम है. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज. जो इंटरनल एनर्जी U का फॉर्मूला आता है N CV इंटू चेंज इन टेम्परेचर. हियर N is given 1, N is the mole, number of mole, और यहाँ जो है this is 1, then U change in internal energy comes to CV delta T. टेम्परेचर डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है A और B पर. तो यहाँ पे गैस जो A के लिए गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम. PV इज इक्वल टू RT. P है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 और वॉल्यूम है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू RTA. TA is 220 into 10 to the power by R. And TB, for TB, PV is equal to RT. ये फॉर्मूला यूज़ कर दें हम. तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉल्यूम है 6 इंटू 10 टू द पावर 6 is equal to RTB. TB is equal to 12 into 10 to the power 3 by R. तो TA is greater than TB. Hence, जो internal energy will be less at B with respect to A. तो loss of internal energy होगा. Then delta T is equal to TB minus TA. 12 into 10 to the power 3 by R minus 20 into 10 to the power 3 by R. This comes 8 minus का 10 to the power 3 by R. This is delta T, change in temperature. Now CV, delta T is minus 8 into 10 to the power 3 by R. Now CV, for diatomic gas gamma or Cp by Cv is 1.4 or 7 by 5 and Cp minus Cv is equal to R. From here Cp की वैल्यू पुट कर देंगे. Cp is 7 by 5 Cv minus Cv is equal to R या 2 Cv by 5 is equal to R और Cv is equal to 5 by 2 R. तो डेल्टा UA is CV into delta T. CV is 5 by 2
R and delta T is minus 8 into 10 to the power 3 by R. R से R क्रॉस हो गया, 4 माइनस का है, माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल या minus 20 kilojoule. This will be the change in internal energy. This B is the correct option. Next question है, an ideal gas is compressed to half of its volume by means of several processes. Which of the process results in a maximum work done on the gas? Here this is P pressure and V volume. सपोज किसी ए पॉइंट पर थी गैस, ए स्टेट में थी, तब इसका वॉल्यूम इज V एंड फाइनली इट गोज टू बी पोजिशन, ये V/2. नंबर ए, एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक, PV की पावर गामा इज कांस्टेंट. तो यहाँ पर प्रेशर, इफ दिस इज P1 इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू P2 इंटू V/2 की पावर गामा, या P2 इज इक्वल टू P1 V/2 की पावर गामा, P1 इंटू 2 की पावर गामा. गामा इज मोर देन 1, डायटोमिक के लिए 1.4, मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, एक से अधिक होता है तो P2 इज ग्रेटर देन 2P1. द फाइनल प्रेशर इज, अगर P2 यहाँ है, दिस इज 2P1. In adiabatic process, it will be somehow above this and graph will be like this. This is adiabatic. Now next, isobaric. Pressure is constant, hence the graph will be for adiabatic process. For isobaric process, the graph will be like this. Next, isochoric. Isochoric volume is constant, but given the volume becomes half. This is not applicable. And last है isothermal. D, isothermal process. PV is constant, then P1 into V is equal to P2 into V/2. P2 is 2P1. जो आइसोथर्मल होगा वो 2B से यहाँ इसको मिलाएंगे.
ये एडियाबेटिक, दिस इज आइसोथर्मल, and this is isobaric. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो ग्राफ एंड जो वॉल्यूम एक्सिस है इसके बीच का एरिया, जो पीवी ग्राफ में जो है ये वर्क डन होता है। हैंस जो एरिया मैक्सिमम एरिया होगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, देन maximum work will be done in adiabatic process. This A is the correct option. Next question है, the coefficient of performance of a refrigerator is 5. If temperature inside the freezer is minus 20 degrees centigrade, the temperature of the surrounding to which it rejects heat is 31 degrees centigrade, 41 degrees centigrade, 11 degrees centigrade and 21 degrees centigrade. Suppose this is freezer, this is substance, and this is surrounding, this is T2 वर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप, this is surrounding, this is T1, यहाँ से एक्सट्रैक्ट की Q2 एनर्जी, ये W वर्क किया ऑन द सब्सटेंस एंड हीट रिजेक्टेड है Q1. दिस इज फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर. T2 is given, T2 is minus 20 degree centigrade or minus 20 plus 273 is equal to 253 Kelvin. जो बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज Q2 by W और Q2 by W की वैल्यू होती है Q1 माइनस Q2 और 1 अपॉन Q2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया Q1 by Q2 माइनस 1. दिस Q1 by Q2 is equal to T1 by T2, 1 by T1 by T2 minus 1. This beta comes. Beta की वैल्यू is 5, 1 upon T1 upon 253 minus 1 और T1 by 253 minus 1 is equal to 1 by 5 या 0.2. T1 by 253 is equal to 1 plus 0.2, 1.2. T1 is equal to 253 into 1.2. ये 303.6 Kelvin. T1 की वैल्यू 303.6 303.6 Kelvin और 303
303.6 minus 273 degree centigrade, 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड T1 की वैल्यू, और ये T हम इसको T लिख सकते हैं, T इन डिग्री सेंटीग्रेड, T1. This is approximately equal to 31 degree centigrade. The option is A, that is correct.